So hi everyone, a very good evening to all of you and welcome back once again to another class of PIB Current Affairs. In today's class, my dear friends, we are going to talk about the PIB news from 10th and 11th of October, and this is the date up to which you need to cover the current affairs for the upcoming RBI Grade B examination. So as I promised you that I will come up with a video where where I will be covering the PIB news from 10th and 11th. So here I am, my dear friends. छोटी सी वीडियो है, इसमें जो डिटेल्ड न्यूज है उसके मैंने क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं. सो वी विल बी डिस्कसिंग द न्यूज एंड देन देर आर अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन शॉर्ट थोड़े से ज्यादा हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स विद द वेरी फर्स्ट न्यूज which is about an MOU signed between NEGD, that is National E-Governance Division, and National E-Governance Services Limited. Now, what is the purpose of this particular MOU, my dear friends? The MOU has been signed for enhancing and integrating the digital document management for businesses and government entities. अब इसमें होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ. अंडर दिस कोलैबोरेशन NEGD का एक क्लाउड बेस्ड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटिटी लॉकर. ठीक है, इट विल बी इंटीग्रेटेड विद NECL's नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड्स डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म. ठीक है, अब देखो, एक है एंटिटी लॉकर और एक है डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म. इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया जाएगा. बट ये दोनों है क्या? ठीक है, देखो, एंटिटी लॉकर बहुत सिंपल है. जैसे डिजिटल डीजी लॉकर है स्टूडेंट्स के लिए, वेयर द स्टूडेंट्स कैन अपलोड देयर डॉक्यूमेंट्स. सिमिलरली एंटिटी लॉकर is for the organizations, the private organization, the government entities, where they can upload their documents. ठीक है, it is an extension of DigiLocker initiative aimed at strengthening document issuance, storage, sharing and verification for the business houses, companies, private organizations. ठीक है, and digital document execution platform क्या है? It is a solution, it facilitates डिजिटल पेपरलेस एंड सिक्योर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. तो अब देखो, इससे क्या होगा, एंटिटी लॉकर को हमने कनेक्ट कर दिया डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म से, तो डॉक्यूमेंट वहां से फेच हो जाएंगे एंटिटी लॉकर से. और जो भी, अगर मान लो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट होना है, ठीक है, देयर a contract need to be executed and for that a certain amount of documents are required, a certain number of documents are required. So those documents can be easily fetched from the entity locker now. ठीक है, जैसे अभी आपने आरबीआई का फॉर्म भरा था तो डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट्स फेच हो गए थे, बिल्कुल सेम काम हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होना है तो उसके लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो दैट डॉक्यूमेंट कैन बी फेच्ड फ्रॉम द एंटिटी लॉकर डायरेक्टली. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर माय डियर फ्रेंड्स. ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट न्यूज. न्यूज नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई बिलीव इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा. तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके पेड एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया एंड ड्यूरिंग हिज विजिट a lot of announcements have been made, a lot of MOUs have been signed, a lot of initiatives have been announced. ठीक है, सबसे पहले in the area of technology and innovation, in the area of technology and innovation, establishment of India UK Connectivity and Innovation Center. India UK Connectivity and Innovation Center is going to be established. ठीक है, and for this India and UK have committed a combined 24 million pound over 4 years. ठीक है, 24 मिलियन पाउंड जो है वो कमिट किए हैं दोनों देशों ने, इंडिया और यूके ने. ठीक है, नाउ दिस विल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर यूके इंडिया टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव व्हिच इज जॉइंटली बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय यूके रिसर्च एंड इनोवेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, DOT. ठीक है जी. नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया यूके जॉइंट सेंटर फॉर AI, लॉन्च ऑफ फेज 2 ऑफ UK India Critical Mineral Supply Chain Observatory and establishment of a new satellite campus at IIT ISM धनबाद. और ये जो फैक्चुअल न्यूज है, जैसे कि establishment of a new satellite campus है at IIT ISM धनबाद, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे फेज 1 में पूछे जा सकते हैं. उसके अलावा establishment of critical minerals industry guild to secure resilient supply chain and promote green technologies. ठीक है, in the area of education there are 2 announcements, handing over the letter of intent for opening up of campus of Lancaster University in Bangalore. So a lot of foreign universities are establishing their campus in India now. So now a letter of intent has been handed over to the campus to the Lancaster University to establish a campus in Bangalore. Okay, in principle approval for opening of campus of University of Surrey in Gift City. Right, in the area of climate health and research, Phase 3 of Biomedical Research Career Program will be launched. Offshore Wind Task Force will be established and a letter of intent was shared between ICMR and NIHR, United Kingdom on health research.
देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के एरिया में इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड इंडिया यूके सीईओ फोरम, इनॉग्रल मीटिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड इंडिया यूके सीईओ फोरम माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। के अलावा रीसेटिंग इंडिया यूके जॉइंट इकोनॉमिक ट्रेड कमिटी, which in short is called JETCO. Now this committee, this resettlement will support the implementation of CETA between the two nations. ठीक है, and a new joint investment in the climate technology startup fund, which is a strategic initiative under MOU between the government of UK and State Bank of India. Which bank? State Bank of India. And under this MOU, the support is being provided to the innovative entrepreneurs in sectors such as climate technology and AI. और उसी के अंदर एक नया फंड बनाया जाएगा, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंड, ठीक है। क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंड विल बी इशूड, विल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर MOU साइंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ यूके एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इस MOU का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स इन सेक्टर्स लाइक क्लाइमेट टेक्नोलॉजी एंड AI। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट न्यूज है हमारी नेशनल रेड लिस्ट असेसमेंट। रेड लिस्ट क्या होती है? रेड लिस्ट आपने सुना होगा, IUCN रेड लिस्ट होती है, वेयर इट इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ द स्पीशीज विच आर endangered, which are at the verge of extinction, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज लॉन्च्ड नेशनल रेड लिस्ट असेसमेंट ड्यूरिंग IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इन अबू धाबी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज लॉन्च्ड नेशनल रेड लिस्ट असेसमेंट ड्यूरिंग IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इन अबू धाबी। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है दैट वेयर दिस वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इज बीइंग हेल्ड, so it is being held in Abu Dhabi, ठीक है। नाउ ये रेड लिस्ट असेसमेंट है क्या? सो बेसिकली जैसे वी हैव अ रेड लिस्ट फॉर IUCN, नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल क्रिएट अ रेड लिस्ट ऑफ इट्स ओन which will outline the roadmap to assess and monitor the conservation status of the species of India, right? It will establish a nationally coordinated red listing system. So there will be a nationally coordinated red listing system where the list of all the endangered and the species which are at the verge of extinctions will be there. Okay, it will be a tool for accurate assessment, conservation planning and informed policy development. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स कुछ नहीं है, एक रेड लिस्ट हम बना रहे हैं, सिंपल, ठीक है। द गोल इज टू पब्लिश नेशनल रेड डेटा बुक्स फॉर बोथ फ्लोरा एंड फौना बाय द ईयर 2030। टारगेट क्या है कि हमें 2030 तक एक नेशनल रेड डेटा बुक बनानी है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए, ठीक है। नाउ दिस विल बी प्रिपेयर्ड बाय दिस नेशनल रेड लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया and botanical survey of India in collaboration with IUCN India and Center for Species Survival India, ठीक है जी। क्लियर है नेशनल रेड लिस्ट असेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी न्यू इनिशिएटिव फॉर टेलीमानस। सो टेलीमानस आपको पता होगा, टेलीमानस इट इज अ स्कीम बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू प्रोवाइड मेंटल हेल्थ असिस्टेंस टू द बेनिफिशियरीज, ठीक है, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस, ठीक है। ना हुआ क्या है, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज लॉन्च्ड न्यू इनिशिएटिव फॉर टेलीमानस। तो बेसिकली टेलीमानस को थोड़ा सा अपग्रेड किया हमने, ठीक है। पहला क्या है, द टेलीमानस ऐप इज नाउ अवेलेबल इन 10 रीजनल लैंग्वेजेस इन एडिशन टू इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। मतलब टोटल कितने लैंग्वेजेस हो गई? 12, ठीक है। और 10 रीजनल लैंग्वेजेस कौन सी हैं जी? असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, ओडिया एंड पंजाबी। You need not remember the name of all these languages. Just remember 10 new regional languages have been added and now the Telemanus app is available in 10 regional languages and English and Hindi. So total 12 languages. ठीक है. The accessibility features have been added to make the interface more user friendly for visually impaired users. जो visually impaired users हैं उनके लिए फीचर्स को और accessible बनाया गया है, ठीक है। और एक चैटबॉट फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है अस्मी, ठीक है, ध्यान रखना नाम। चैटबॉट फीचर लॉन्च हुआ है जिसका नाम क्या है? अस्मी। इट विल अलाउ यूजर्स टू एंगेज विद द ऐप एंड सीक इन्फॉर्मेशन और हेल्प रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ। सो बेसिकली चैटबॉट फीचर है, उससे बात करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन या फिर हेल्प दे देगा रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ। क्लियर है? चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चंस इन शॉर्ट की तरफ। एंड इफ यू वांट टू हैव द PDF ऑफ दिस क्लास जस्ट स्कैन दिस QR कोड and join the Telegram channel, my dear friends. Next question is, during a special Krishi program at the Indian Agricultural Research Institute, Prime Minister has launched 2 major schemes in the agriculture sector. ये पता नहीं बात कितनी बार लॉन्च करेंगे, पर ठीक है दोबारा से कर दिया। In the agriculture sector with an outlay of 35,440 crores.
Pradhan Dhan Dhanya Krishi Yojana has been launched with an outlay of obviously 24,000 crores, while Mission for Atmanirbharta in pulses has been launched with an outlay of 11,440 crores. The right answer is option A. ये हम पहले भी कर चुके हैं ऑफ कोर्स, बट ये मैंने दोबारा से इसलिए कर लिया क्योंकि अभी ये रिसेंट रिलीज में आया है, तो क्या पता आपसे ये नंबर पूछ ले, 35,440 करोड़, यू नेवर नो, राइट। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस में देर इज एन ऐप, there is a portal which is called Sathi portal, and this portal will be used by the states for effective implementation of this scheme. ठीक है, this Sathi stands for Seed Authentication, Traceability and Holistic Inventory, and it has been developed by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in partnership with National Informatics Center. ठीक है, ये ध्यान रखना important है। Next question, name the operation carried out by DRI to dismantle a highly organized gold smuggling syndicate at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport of Mumbai. It is Operation Golden Sweep. Ministry of Social Justice and Empowerment has launched the revamped Sugamya Bharat app at Purple Fest in Goa. It has been developed by which of the following organizations? In technical partnership with NAB Delhi, that is National Association for the Blind Delhi, iSTEM and Mission Accessibility. It has been developed by SBI Foundation. Very important question. Niti Aayog has released a roadmap for job creation in AI, in the AI economy. It has been developed by Niti Aayog's Frontier Tech Hub in collaboration with NASSCOM and BCG. The report highlighted that while India's tech service sector faces the threat of significant job displacement by 2031, it also has the opportunity of create up to 4 million new jobs. So on one hand, it is taking the jobs, okay, but on the other, it has a potential of creating 4 million new jobs in the next 5 years. The right answer is option C. So AI, if used judicially, can prove to be a boon for the world. The Ministry of New and Renewable Energy, has formally recognized 3 major ports as green hydrogen hubs under the National Green Hydrogen Mission. Which of the following are the 3 major ports? The 3 major ports are, my dear friends, VO Chidambaram Port Authority, Deen Dayal Port Authority and Paradip Port. The right answer is option D. I hope it is clear. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, तो फिर से DARPG की मंथली रिपोर्ट आई है। The DARPG, Department of Administrative Reforms and Public Grievances, has released CP Grams 38th monthly report for states and UTs for September. Now this you have to remember, of course. It provides a detailed analysis of types and categories of public grievances and the nature of disposal by the states and UTs. Uttar Pradesh recorded the highest number of disposals in September 2025, followed by. Now this time number 1 पे हमेशा उत्तर प्रदेश रहता है. This time also it is at number 1. Second पे गुजरात रहता है. हर महीना हमने गुजरात देखा था, but this time, my dear friends, it is Kerala, and that is why it becomes really very important to you for to remember. ठीक है, Kerala is the correct answer. What is the average grievance disposal time in the central ministries or departments for September 2025 according to 41st report on central ministries or departments published by DARPG? ये बिल्कुल सेम है, अभी भी वही है, 15 दिन, हर महीने 15 दिन ही होता है, इस महीने भी 15 दिन है. ठीक है, क्लियर है? चलिए. The first Arise Cities Forum 2025 was co-hosted by ICLEI South Asia and National Institute of Urban Affairs. The forum adopted the Delhi Declaration on Local Action for Global Climate Goals, setting the stage for the upcoming UNFCCC Climate Conference COP30. In which country the COP30 will take place? It's an important question. मुझे लगता है कि ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ऐसा ही बिल्कुल. COP30, my dear friends, is going to take place at a place called Belém, which is in Brazil. The right answer is option A. NEGD and Sehkar Taxi Cooperative Limited have signed an MOU aimed at extending the strategic advisory and technical support in the areas of platform integration, cybersecurity, privacy, compliance and governance. What is the brand name of Sehkar Taxi Cooperative Limited? The brand name, my dear friends, is Bharat Taxi. Bharat Taxi is the brand name. The G20 Trade and Investment Ministers meeting in Kebeha. Okay, this is pronounced as Kebeha, right? South Africa. It is a city in South Africa. The G20 is the Forum for International Economic Cooperation. It comprises 19 countries, European Union and African Union.
G20 members account for around 85% of global GDP, over 75% of world trade, and roughly two-thirds of the world's population. In which year the African Union became the member of G20? It became the member of G20 in the year 2023, my dear friends, uh, during India's G20 presidency. Which of the following organizations has announced the Spark 4.0, the fourth edition of Students Program for Ayurveda Research, Ken, that is Spark, which aims to ignite scientific curiosity and research aptitude among undergraduate Ayurveda students across India? It is CCRAS, that is Central Council for Research in Ayurveda Sciences. The third edition of International Purple Fest is being organized in Panaji in Goa. With what objective the fest is being organized? It is being organized to encourage persons with disabilities to showcase their artistic talents. ठीक है, गोवा पर्पल फेस्ट पणजी गोवा, ये तो ये याद रखना. और कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ठीक है. FICCI in collaboration with the Ministry of Health and Family Welfare and which of the following organizations has organized the 19th edition of FICCI Heal 2025 with the theme Care at 25 Defining Moments in Healthcare? It is Niti Aayog. With which of the following organizations International Center for Automotive Technology has signed an MOU to drive a new era of Swadeshi solutions for the automotive sector? It is Center for Development of Advanced Computing, that is CDAC. Which of the following organizations has organized the 23rd edition of Bharat Telecom 2025, a global buyer-seller meet alongside the ongoing India Mobile Congress in New Delhi? It is Telecom Equipment and Services Export Promotion Council. Telecom Equipment and Services Export Promotion Council. In first phase, the Dravya portal aims to catalog information on 100 key medicinal substances. It is an initiative of, ये हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, अगर आपको याद हो. It is an initiative of CCRS, again CCRS, that is Central Council for Research in Ayurvedic Sciences. Where has Ministry of Environment, Forest and Climate Change inaugurated Breathable Art as part of the Breathe of Change Clean Air Blue Skies campaign? ये कुछ नहीं है, कुछ प्लांट्स वगैरह लगाए इन्होंने. ठीक है. और कहाँ पे लगाए? रोहिणी, एट अ प्लेस कॉल्ड रोहिणी इन दिल्ली. रोहिणी एक जगह है दिल्ली में, वहां पे लगाए. Niti Aayog has released the Frontier Tech Hub study, AI for Inclusive Societal Development. The report provides a roadmap for leveraging AI to drive inclusion and productivity in the informal economy. The report has been prepared in partnership with Deloitte. The report, my dear friends, has been prepared in partnership with Deloitte. Again, Niti Aayog has proposed a national mission to create the roadmap and ecosystem that will make AI accessible, affordable, and impactful for every informal worker. The mission will harness AI, blockchain, immersive learning, and other frontier technologies to dismantle the structural constraints. Name the mission. Very important. It is Digital Shram Setu, which has been proposed as a national mission by Niti Aayog, the centralized think tank of the Government of India. Ministry of Labour and Employment, very important again, has released the draft National Labour and Employment Policy. It envisions a labour ecosystem that ensures protection, productivity, and participation for every worker. It seeks to create a balanced framework that upholds workers' welfare while enabling enterprises to grow and generate sustainable livelihoods. What is the title? It is Shram Shakti Niti 2025. Shram Shakti Niti 2025. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपने पहले पढ़ा होगा, बट इसमें जो आज क्वेश्चन है वो आपने नहीं पढ़ा होगा. ठीक है. इंडिया हैज बीन कन्फर्ड विद द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी अवार्ड्स 2025 बाय ISSA. ये हमने पढ़ा था. Recognizing the country's exemplary efforts in expanding social protection and ensuring inclusive welfare for its citizens. ठीक है. The award is presented once every 3 years at the World Social Security Forum. Last time, which country was awarded in 2022? The country that was awarded in 2022 was Iceland, and Brazil in 2013, China in 2016, Rwanda in 2019 and Iceland in 2022. ये चारों याद रखना, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है. ऑलराइट, चलिए. The Ministry of Housing and Urban Affairs observed the World Habitat Day on 8th of October in New Delhi on the theme Urban Solutions to Crisis. थीम क्या थी जी? Urban Solution to Crisis. So the correct answer is option A. ठीक है. And the last question, my dear friends, for today.
The Agri-Annex is a national program of MITI involving research, development, deployment, demonstration, and commercialization of technologies in the agriculture and environment domain. The program is being implemented by CDAC, Center for Development of Advanced Computing. Okay. All right, my dear friends, that's it for today's class. I hope all the questions and their explanations are clear. Now, I wish you all the best for the upcoming RBI Grade B examination. 11 तारीख तक का आपको करंट अफेयर्स मैंने करने के लिए बोला था, मैंने करा दिया है. अब आपको करना है, जितना आपने कर लिया है बस उतना सा करके जाइए, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है. Whatever you have done, that is good enough. Have faith on yourself. And yeah, SEBI Grade A notification has been released, my dear friends. If you want to enroll in the course, we have already launched a crash course, so go with it. India's best teachers are on it. Okay, and yeah, that's it for this class. I'll see you in some other class, my dear friends. और अभी marathon चल रहे हैं, please do watch the marathons. Goodbye, take care, and God bless.